फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मंडला आर्ट ब्लॉग। यस, एंड मैं कभी भी ट्रेंड नहीं हुई हूँ एंड आई सीरियसली हैव नेवर ट्राइड समथिंग लाइक दिस। एक दो बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत ही ऐसा नहीं था जो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। सो लेट्स सी, इवन विदाउट एनी ट्रेनिंग आप लोग कैसे एक मंडला आर्ट कर सकते हो। और मंडला आर्ट का बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, वो आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, यू नो। सो इसका और भी बहुत सारा बेनिफिट है जो मैं आप लोगों को बोलती रहूँगी बीच बीच में। सो या, विदाउट एनी फर्दर डिले, let's begin. So what are the requirements? One black marker, a canvas, a tab you can use as per your need, and a compass and some colors, So yeah, let's begin. So I have few colors with me. It's a very simple box, and ये बहुत लोग मतलब it's a basic color, just 6 colors. I have the most important and basic colors, and now I'm going to open this. Okay, एक प्लास्टिक है इधर, so ये open करती हूँ. Oh my God, my canvas is very dirty. मुझे लगा था ये बाहर से है. Why it is like this? दुकानी ने मुझे वो क्या वेब को बनाया. So yes, it's not that bad also. Okay, काम चल जाएगा. Let's begin. Hello guys, so this is the second day. I have already completed half of the art, and this is the art and it's looking quite good now, but अभी मैं उसको complete करूँगी. So yeah, let's begin from the half.
guys, I have completed my mandala art and it's looking quite beautiful and quite pretty, isn't it? तो मैंने विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ मंडला आर्ट मैंने ये ड्राइंग किया है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा आइडियाज़ नहीं है या तो नॉलेज नहीं है अबाउट मंडला आर्ट, आप लोग भी ड्राइंग कर सकते हो ऐसा। एंड इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड आप लोग देख सकते हो ये इतना अच्छा दिख रहा है, इतना मतलब प्रीटी है। तो यू पीपल कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई फॉर दिस। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।